I think it's visible. Yes. Okay, so let's start. So the FlutterFlow Builder Series. Um, why is it? Okay, yeah. So FlutterFlow Developer Groups New Delhi. I think most of you have joined the community recently, so I'm going to give you a little bit of introduction. Who are we, and why did we create this community? So FFDG New Delhi stands for FlutterFlow Developer Groups New Delhi. This is a community that we started back in August 2024, but we did our first event on April 20th, 2025, which was in person, and this is our second event that we are doing. This is a community of enthusiasts or passionate people who wants to build uh, something meaningful with Flutterflow, and we can also hold discussions with Flutter as well. It's not just a community where you can discuss about Flutterflow only, because Flutterflow is built on top of Flutter itself, so we can have conversations about Flutterflow, or design in general. We connect developers, designers, and dreamers who wants to build something crazy or something meaningful together, learn together, and grow together. So if you still haven't joined our community on Meetup, you can scan this QR code and join it from here. I'll just wait for like 10 seconds for you to either click a photo or join the community if you haven't as well. In the meantime, if you have any questions about the community, you can just drop it in the chat or just turn on your mic and ask. And we are just on Meetup and not on Communal or any other way. We have an Instagram and we have a Twitter. Uh, so if you type in FFDG New Delhi on Twitter, the handle is this FFDG New Delhi, and FFDG New Delhi, the handle is same on Instagram as well. So if you just type in there, and you can join from there as well. We post stories and we post regularly about events there as well. Okay, so what is FlutterFlow Builder Series, anyways, right? So the FlutterFlow Builder Series is a 4-week hands-on learning program that we have designed for you all, where you can learn to build and launch real mobile apps using FlutterFlow. And FlutterFlow is a visual development platform that gives you the ability to build real world applications. Each week we have planned some sessions. As you can see, session 1 we are having today, FlutterFlow Fundamentals, and we are not going to take a lot of time, a lot of time from your weekend, because we know everybody, like who is a working professional. They are working 5 days in a week or 6 days in a week, so we don't want to bug you with all the meetings and everything. So it's like just 1 or 1.5 hour session that we are holding each week on Saturdays only. So the first session is FlutterFlow Fundamentals. The second one is design system, where we are going to show you how you can create themings and how you can create widget animations and sort of stuff like that. So tune in for session 2. The RSVP will be open for session 2 at 6 p.m. today. Yash will show you more about that. And then we have session 3, Firebase integration. So with FlutterFlow you can integrate Firebase, you can integrate Supabase. There are a lot of integrations that you can do. So we'll be talking about that in session 3. In session 4 we are going to show you how you can add your own custom code. So if you are a developer and you want to add your own custom code, you can do that with FlutterFlow. How you are going to manage your state in any application, and how you can deploy your app on Play Store. So we are going to talk about that in session 4. We are also planning to have a FlutterFlow Builders Hackathon, which we are still planning. So this, at the end of the series, we are going to host a mini FlutterFlow hackathon, where we will be giving you like 24 hours to build a simple app using everything that you have learned. It can be solo or it can be in a team. So we have a Discord server where you can interact with others and build a team if you want to participate in the hackathon. More details on hackathon we will be sharing on Discord and in the upcoming sessions as well. So if you want to test your skills, get creative, and show what you have built,
this hackathon is for you, and we are going to showcase some of the top apps that we feel are meaningful on our socials, and I'm going to ping the Flutterflow community that we have outside New Delhi for this. So this is what we are going to do in the next 4 weeks. Then a few house rules before we start. So please keep your mic muted when you are not speaking, so that we can avoid the background noise. You can use the chat for questions or comments, and please keep it relevant and respectful. We want this to be a safe space, and we want you to be interactive at the same time. And please participate actively. You can ask, you can share, and you can please let others speak as well. And share on social media if you are going to click photos of the session, or if you like if you want to click a photo or record a video, or if you want to tag us, so please do that. And you can use this hashtag ffdgnd and hashtag FlutterFlow Builder Series while tagging us. And these are our social handles, so feel free to do that. So without further ado, let's get started. Over to you, Yash. Okay, so hi everybody. Hi everyone. So let me just share my screen. So I hope my screen is visible. Yes, it's Yeah. visible, Yash. Okay. So hey, this is the first session of our FlutterFlow Builder Series, and today we are going to discuss about the fundamentals of FlutterFlow, and we would be navigating the platform, and by the end, we will develop an application with it. So before starting, I would like to ask that are you guys comfortable with English or Hindi or a mix of both the languages? Okay, so yeah, mix is good. So let's start the session. Okay. Okay, so I usually start my sessions with a meme. So I bet by the end of the session, this would be you guys. Okay. Also, I know most of you have a very less attention span. So just for those people. I'm Yash Khatter. I'm a certified photographer for past 4 years. I'm a mobile engineer internet aptitude. I'm also the co-organizer at FFDG New Delhi. I'm a former intern at Flutter Your Way, BIP, and Urban Rider. And also I do some freelancing and app development. So this was the boring part. Now let's go to what is FlutterFlow. So I would like to ask you guys, what is FlutterFlow? Anybody who would like to share with us what is FlutterFlow in the chat, or they can open their mic. Anybody? Okay. No clue tool. So this is the thing. The FlutterFlow team, they don't advertise FlutterFlow as a no-code tool. It's they refer it to as a visual builder for applications. Okay. Making mobile web applications via one platform. Anybody would like to open their mic and tell? Okay. Yeah. So what is FlutterFlow? Basically, as I told, FlutterFlow is like a visual builder for Flutter apps. किसी को ये वाला सिंबल याद है? What is this? जो दो आईज का सिंबल है यहाँ पे. कोई चैट में लिखना चाहेगा what is this symbol? Do you all play games? Yeah, Hmm. Pratyush said Purple Place, Purple Palace. Okay.
Okay, okay, okay. One of Windows 7 games. Yeah, yeah, that's correct. One of Windows 7 games. Have you played Solitaire? Like, do you like Solitaire or something? Okay. Nah, वो तो कभी समझ में नहीं आया. Do you all play GTA 5? Like Gen Zs? Yeah, Yeah, Rishabh says yes. Okay. COD, anyone? Call of Duty? yes. Okay, Rishabh is a gamer. Every game. Yeah, cool. Okay, so you must be remembering that उस गेम में एक गेम था छोटा सा जिसमें हम केक्स बनाते थे. So in that we used to have first a base and then उसके ऊपर क्रीम जाती थी. Then cake used to move forward and उसके ऊपर sprinkles होते थे. And उसके बाद अपना केक रेडी हो जाता था. So exactly like that, we have FlutterFlow. So FlutterFlow में we just drag and drop items to build the application. Then we can export real Flutter code. So from FlutterFlow, we can export the code, we can view the code, we can even maintain a GitHub commit history. Then we have Firebase APIs, custom functions, all supported. So this is the best part of FlutterFlow that we have all the integration so easy. Normally सबसे ज़्यादा दिक्कत integrations में आती है. अगर आपको Razor पे करना है, Stripe करना है, even Firebase. So this is the best part of FlutterFlow. Next. Okay, so what we are going to do right now is हम FlutterFlow platform का एक tool लेके we would navigate the UI builders, then themes and styles and other stuff. So what I want you to do is आप एक QR code scan करो and go to the FlutterFlow website. I would wait for like 30 seconds for you to scan this QR code, or you can directly go to the website. Give me a thumbs up once you are done with this. Okay, 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 okay. Cool. So I hope सभी फ्लटरफ्लो की वेबसाइट पे पहुंच गए होगी. And did you guys register there? सबका अकाउंट है ना फ्लटरफ्लो पे? Is there anybody इसका अकाउंट ना हो? Because हम ये पूरा हैंड्स ऑन वर्कशॉप करने वाले हैं. And you're going to create something amazing. So, if you haven't, then please register and we can wait if you would like us to wait. So, like Hmm. 1 or 2 minutes, we can wait. It's very easy. In the end, we would like you to showcase your application as well. That is why we are asking you to create an account and follow along. And this is a weekend, right? You all are here, you want to build something crazy. So why not follow along and actually build something crazy? You all are giving us your time, so we don't want to waste your time as well, right? And who knows, maybe you love Flutterflow. Okay, so सब इस वाले स्क्रीन तक पहुंच चुके हैं. If you are facing any issues as well, please let us Hmm. know, okay? Okay, so on this screen, ऊपर एक create new का button है. So this is where you can create the new FlutterFlow project. And I already have 4 projects, so they are displaying here. So let's create a new project, and I want you guys to create it with me. So here I have many templates. So we have e-commerce, business, AIN, chart, dashboard, etc. So these are the pre-made templates, but हम एकदम scratch से बनाने वाले हैं आज के application. So this would be the name of the application. Let's name is uh, portfolio app. Okay, so मैंने reveal ही कर दिया what we are going to build. So start building, and आपको कुछ ऐसा दिखेगा. So let me know जब आप इस वाली स्क्रीन तक पहुंच जाओ.
ओके, तो प्रोजेक्ट बना दिया सबने। ओके, सो दिस इज हाउ द फ्लटरफ्लो प्लेटफॉर्म लुक्स। ये जो मिडल वाला पोर्शन है, where you see the application, this is called canvas. And on the right hand side you have the properties panel, and on left hand side you have the navigation panel. तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर जैसा रिजेंबल कर रहा है, कोई बता सकता है? कोई सॉफ्टवेयर जिसका यूआई भी काफी ज्यादा ऐसा होता है? करेक्ट, फिग्मा फिग्मा फिग्मा। करेक्ट। एंड ट्रस्ट मी, ये फिग्मा जितना ही इजी है। सो हियर वी हैव ऑल द विजेट्स। आई होप सबको विजेट्स पता होगा। इफ नॉट, वो हम भी डिस्कस करेंगे बाद में। So these are the common widgets: text, columns, rows. Then we have the tree. This is the widget tree. And जैसे जैसे हम components add करते जाएंगे, ये tree बड़ा होता जाएगा. Then let's go हेलो to the यश। last. Hi, hi, hi. हाँ, क्या मेरे को बता सकते हो कि आपने ये कैसे क्रिएट किया मेरे को प्रोजेक्ट का Okay, पोर्टफोलियो so सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले तो आप इस वाले स्क्रीन तक पहुंच गए थे। हाँ। ओके, सो ऊपर क्रिएट न्यू का बटन है। यहाँ पे जाके you have to type the name of the application and click on start building. ओके ओके। Okay, let me refresh. हाँ हो गया था। ओके, कूल। किसी को भी डाउट हो तो बीच में पूछ लेना, ठीक है? तो लेट्स गो टू द लास्ट बटन है, सेटिंग्स। तो देयर आर लॉट ऑफ सेटिंग्स हियर। तो फर्स्ट इज द ऐप डिटेल्स। तो ऐप के जितने भी छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं, लाइक द डोमेन नेम, पैकेज नेम, इनिशियल पेज, जब आपकी ऐप लॉन्च होती है तो कौन सा पेज दिखेगा, ऑल ऑफ दीज आर हियर। देन योर ऐप एसेट्स। तो ऐप में जो भी इमेजेस होगी, आइकन्स होंगे, वो यहाँ पे ऐड होगी। देन वी हैव नैप बार एंड ऐप बार। जो आपको टॉप पे नैप ऐप बार दिखता है एंड बॉटम में नैप बार, वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। देन यू हैव फायरबेस। ओके, सो दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन कनेक्ट द फायरबेस। एंड ट्रस्ट में बहुत ईजी है फायरबेस कनेक्ट करना। हम सेशन 3 में से प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे, अभी बस से ओवरव्यू दे रहा हूँ। एंड देन वी हैव लैंग्वेजेस, प्लेटफॉर्म्स, ऑथेंटिकेशन। सो अगर आपको फाइबर्स ऑथेंटिकेशन यूज करना है, यू कैन इनेबल इट फ्रॉम हियर। सो देयर आर लॉट ऑफ इंटीग्रेशंस हियर, एंड हम अपने सब्सिक्वेंट सेशंस में वो डिस्कस भी करेंगे। नाउ लेट्स गो बैक हियर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा लोगों को, है ना, सबको? So just to summarize, we have not done a lot. We just head over to flutterflow.io, and we have just created a new project by clicking on top right. There is a button called create new. You can just click on that. You can write the name of your application, for example portfolio, and then you just have to hit enter or start building, and then you will see the app builder where you can actually create the flutterflow application. And Yash has explained a little bit about the flutterflow tool, as in where are the widgets, what kind of integrations you can do, and sort of stuff like that. So you have not missed a lot, because we will be revisiting each and everything again and again as we build our application. So if you still haven't done anything, you just head over to flutterflow.io and create a new project. This is actually the part where Yash will actually tell you how you can create the application, okay? And this session is not recorded, so you have to be attentive and ask questions. If you feel that you have missed a step, please drop it in the chat, and I'm here to help you in the chat as well. So Yash, good to go. Okay,
So this is the application we are going to build today. It's a normal portfolio application. And we would learn about text, images, rows, columns, how to arrange them in FlutterFlow, then how to launch external links in FlutterFlow. So we would be launching LinkedIn, GitHub, Twitter, and also a download resume button. So this is the application, and this is the activity here. Okay. So this entire application, you have to build it here itself, hands-on. And by the end of the session, we would be publishing this application as a web app. So using Firebase hosting through the platform itself, हम इस ऐप को publish करेंगे and you guys would scan this QR code and submit your application. And by the end, हम इसको review करने वाले हैं. इसकी application best थी. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप एकदम साथ साथ बनाना. मैं हर स्टेप के बाद 2 मिनट वेट करूंगा सो दैट यू कैन कंप्लीट द स्टेप. ये क्यूआर कोड मैं बाद में भी दिखाऊंगा, सो नो वरीज ऑन दैट. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड इट. तो ऑन द टॉप हमारे पास एक ऐप बार है विद द टाइटल एंड देन वी हैव अ कॉलम. तो कैन एनीबडी टेल कि कॉलम क्या करता है. हम फ्लटर या फ्लटर फ्लो में कॉलम की यूज करते हैं. Yeah, it put widgets vertically. करेक्ट. वर्टिकली. एंड देन रो क्या करता है. It shows rec- list of records in horizontal way. करेक्ट. इट शोज each child in a horizontal way. करेक्ट. तो यहाँ पे बिकॉज हमें सारी आइटम्स को वर्टिकली अरेंज करना है, द इमेज, द टाइटल, सब टाइटल, तो हमने कॉलम यूज करा है. एंड इनसाइड कॉलम वी हैव अ सर्कुलर इमेज जहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल फोटो लगाने वाले हैं. Then we have a text, which is the title, and then the subtitle. उसके बाद हमारे पास एक डिवाइडर है to separate the upper portion and the lower portion. Divider is nothing but a widget here. Then we have the heading, the subheading, paragraph, and a few buttons at the end. तो हम इन पे आएंगे वापस से. Let's with the top portion of it, the app titles. So I'll go back to the platform. Okay. Let me go again to FlutterFlow. यस. तो सभी इसी स्क्रीन पे हो ना. ओके. तो सबसे पहले हमें अपना ऐप का जो ऐप बार है वो चेंज करना है. तो उसके लिए हम ऐप बार को सेलेक्ट करेंगे एंड आपने देखा राइट साइड पे प्रॉपर्टीज खुल गई ऐप बार की. तो वी हैव द टाइटल, वी हैव द कलर ऑफ द ऐप बार, एलिवेशन, हाइट एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज. तो मुझे इसका टाइटल चेंज करना है. तो आई वुड गो हियर and delete the app by name and let's give it portfolio. हुआ चेंज. किसी को नेम चेंज हुआ दिखा. नहीं ना. बिकॉज हमने टेक्स्ट को चेंज नहीं करा, हमने चेंज करा ऐप बार के नेम को. सो दिस इज द विजेट नेम. हमें एक्चुअली में टेक्स्ट को चेंज करना है. तो उसके लिए मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा एंड अब मेरे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ गई. तो आई गो हियर एंड नेम इट यश पोर्टफोलियो. ओके. आई गेस मेरा इंटरनेट इशू हो रहा है.
Yash, that text. हाँ 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 So you showed us how we can change the name of our widget as well so that we can access it यस later. That's nice. ओके सो किसने टेक्स्ट को चेंज कर दिया So Hamza correctly identified our mistake. We are changing the wrong text. That means people are यस actually listening. That's nice. ओके सो अपने नेम चेंज कर दिया अपने ऐप बार का ओके तो ऑल्सो आई वांट कि सेंटर में हो because this is a single page application. So I want the symmetry to be maintained. So I would click on the text and or how about I just go here to the app bar. Now app bar में एक property होती है center title करके. What this does is ये जो भी आप text लिखते हो app bar का title होता है उसे center में कर देता है. तो मैंने इसे on करा and now the title is centered. हेलो यश। है मेरा वो हो नहीं रहा है टेक्स्ट चेंज। text change नहीं हो रहा नहीं। है. लेट मी शो यू अगेन आप एक बार फॉलो करना ठीक है ठीक है। तो एक तो ये ऐप बार है एंड सेकंड ये टेक्स्ट है तो आपको टेक्स्ट पे दबाना है एंड यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखा होगा उसमें आपको नेम चेंज करना ओके ठीक है, मैंने ऊपर वाले से करा था। है Don't worry, यश ने भी ऊपर वाले पे ही किया हाँ था हाँ पहले. So it's fine. ओके तो ये हो गया सबका एक बार थम्स अप दे दो या हैंड्स रेज कर दो कूल सो नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करा था दैट वी नीड अ कॉलम है ना ओके तो हमारा ऐप बार हो चुका है एंड नाउ वी नीड टू ऐड द कॉलम सो आई वांट कि आप ये सेकंड बटन पे जाओ और द थर्ड बटन से द विजेट ट्री सबको विजेट ट्री दिख रहा है सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले होम पेज है हमारे पास एंड देन वी हैव द कॉलम है इनसाइड द बॉडी ऑफ इट तो होम पेज पे बॉडी के अंदर कॉलम है एंड एक ऐप बार है तो कॉलम ऑलरेडी सेटअप है इसके अंदर वी नीड टू ऐड अदर आइटम्स तो मैं इस विजेट पैलेट पे जाऊंगा एंड सर्च फॉर इमेज यहाँ पे एक सर्कल इमेज करके आ रहा है ऑप्शन एंड हमें यही चाहिए तो मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा एंड यहाँ पे ड्रॉप नाउ जब ये हो जाए तो बताना मुझे ओके नाइस तो अब हम यहाँ पे जाएंगे एंड हमें इमेज चेंज करनी है तो व्हाट आई डू इस मैं अपने गिटहब पे जाऊंगा एंड योर प्रोफाइल एंड कॉपी इमेज एड्रेस उसके बाद फ्लटरफ्लो प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना सर्कल इमेज सेलेक्ट करा मैं प्रॉपर्टीज पैनल में सबसे नीचे गया एंड यहाँ पे ये यूआरएल चेंज कर दिया एंड नाउ आई हैव माय इमेज सबने ये वाला स्टेप कर दिया ओके आई वेट फॉर लाइक अ मिनट आप अपने गिटहब से फोटो उठा सकते हो या कोई भी होस्टेड इमेज है मेरे को ये फोटो वाला आप दोबारा बता सकते हो? ये ऑप्शन मेरे को पाथवे शो नहीं कर रहा है मेरे प्लेटफॉर्म। आपको पाथ शो नहीं करता है ओके आपने सर्कल इमेज सेलेक्ट करा था ना हाँ मैंने वही किया था। ओके एंड जब आपने इसको सेलेक्ट करा एकदम बॉटम पे आपको पाथ नहीं आया हाँ अभी नहीं दिख रहा मेरे को।
मिल गया ना पाथ? हाँ, मिल गया। ओके। तो कोई भी इमेज है, अपनी फोटो आप फटाफट कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, या अगर अभी नहीं मिल रही तो बाद में कर देना, हम आगे मूव करते हैं। तो इशारा मूव, हम सब दे दो फटाफट। ओके, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज द नेम, है ना? तो नेम डालने के लिए मुझे टेक्स्ट विजेट चाहिए। तो मैं विजेट पैनल में जाऊंगा एंड राइट टेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मेरे पास एक टेक्स्ट विजेट आ चुकी है। अब इस टेक्स्ट विजेट को मैं सेलेक्ट करूंगा, आई गो टू द टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड हम यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे अपने नेम से। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम एडिट करेंगे। सेकंड इज, थोड़ा सा पैडिंग देता है हम इसको। पैडिंग इज बेसिकली द स्पेस ऊपर नीचे अपने विजेट के। तो यहाँ पे जो पैडिंग प्रॉपर्टी है, पैडिंग्स एंड अलाइनमेंट्स, इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस हैं: टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। और मुझे टॉप से, मैं टॉप पे दबाऊंगा एंड आई एंटर 20, एंड सेम बॉटम पे आई एंटर 20। तो यू सी यहाँ पे ऊपर 20 की स्पेसिंग आ गई एंड नीचे 20 की स्पेसिंग आ गई। तो दिस इज द पैडिंग। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो हम चेंज कर देंगे, दैट इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे इफ आई क्लिक, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आई क्लिक ऑन इट एंड हमें थोड़ा सा इसको टाइटर आज करते हैं, और मे बी हेडिंग स्मॉल, ये ठीक है। तो यहाँ तक जब हो जाए तो बताना। आपने टेक्स्ट में क्या सिलेक्ट किया था इमेज के बाद? ओके, सो पहले मैंने टेक्स्ट आ रहा है यहाँ से, एंड देन हमने तीन प्रॉपर्टीज एडिट करी। फर्स्ट था टेक्स्ट का नेम, जो कि मैंने यहाँ से एडिट करा। देन मैंने एडिट करा पैडिंग उसकी। नहीं, पैडिंग वाला समझ में आ गया, उससे पहले मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, उसके पहले हमने टेक्स्ट का नाम चेंज करा था। ये वाला कैसे किया था, एक बार बता सकते हो? इमेज के बाद जो आपने किया है। So you want to know how did he actually add the text from the widget panel? या So he ओके, just drag and drop that. And also, Yash, can you tell how did you repeat? Can you repeat the importing image part? Abhishek is asking. How did you actually add the image? ओके। सो सबसे पहले तो हमने विजेट पैलेट से सर्कुलर इमेज सेलेक्ट करा था, सर्कुलर इमेज, एंड हमने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करा था अपने कॉलम में। उसके बाद विजेट पैनल में जाके सबसे बॉटम पे वी हैव द पाथ प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई वेंट टू माई गिटहब एंड वहाँ से मैंने अपने इमेज का एड्रेस कॉपी करा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आई होप अब क्लियर है। I have sent a temporary URL that you can add to your path variable. Okay, so that if you don't want to use your GitHub image, you can use this. ओके, तो मैं आगे प्रोसीड करूँ या और कोई डाउट्स है किसी को? ओके, तो हमारा टेक्स्ट आ चुका है। नेक्स्ट हमको ऐड करना है सब टेक्स्ट। तो फॉर दैट सेम सेम प्रोसेस, हम टेक्स्ट सर्च करेंगे, टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद हमें चेंज करना है इसका टेक्स्ट। तो आई वुड एंटर, लेट्स डू वन थिंग, मैं अपने लिंक्डइन पे जाता हूँ।
and I go to my profile. I just copy this text. Okay, and I come back here and यहाँ पे paste. And थोड़ा सा इसको change करना चाहिए हमें, right? So what I do is, एक तो इसको हम padding देते हैं लेफ्ट एंड राइट से। तो लेफ्ट पे मैं इसको 20 की padding देता हूँ एंड राइट से 20। देन इस टेक्स्ट को ना हम सेंटर अलाइन करते हैं ताकि सिमेट्री बने रहे। तो उसके लिए मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा एंड यहाँ पे कोई अलाइनमेंट करके प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि यस है Text अलाइनमेंट। align. There is a property, and if you go down, 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 see just below line height where your cursor is. Yeah, here. यस, ओके। तो हम टेक्स्ट अलाइन के सेकंड आइटम पे दबाएंगे, दैट इज अलाइन सेंटर। तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ तक सबने फॉलो करा। You can put something cool like Flutter Puglu or FlutterFlow Puglu or something like that if you want, just to have fun. ओके, लेट्स डू इट, कर देते हैं। यस, अब बेटर है। और तो हम ना एक और चीज करते हैं, इसको थोड़ी सी बॉटम से भी पैडिंग दे देते हैं, बिकॉज इसके बाद हम ऐड करने वाले डिवाइडर। So just to summarize, in FlutterFlow, you have this widget panel on the left and you have this property panel on the right. How both of these work is, you have to just drag a widget from the widget panel into your app, and to use the property panel for that widget, you have to select that widget, and in the property panel you will see all the properties related to that widget. Okay, so if you are not able to find something, probably you have not selected your widget for which you have to change the properties. So I hope that is clear. And Yash, did you tell them what are widgets? ओके, डिड आई मिस दैट पार्ट? Yeah, I think. ओके, सो व्हाट आर विजेट्स? मैं पूछना चाहूंगा पहले कि किस किस को पता है व्हाट आर विजेट्स। कोई बताना चाहेगा? एनीबॉडी? क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी सारे विजेट्स यूज कर लिए हैं, टेक्स्ट विजेट, इमेज विजेट, ऐप बार। blueprints, okay, components। yes, तो अगर मैं थोड़ा समराइज करूँ, widgets are like the building blocks of Flutter, तो Flutter UI specifically। तो जैसे कि अगर मैं वेब डेव से कंपेयर करूँ, वेब के अंदर we have the tags, we have the image tag, we have the HTML tag, the div center। Similarly, हमारे पास Flutter के अंदर widgets है। So we have widgets like image widget, text widget, and containers, and उन widgets की कुछ ना कुछ properties होती है। So this is basically what widgets are about। So let's move forward on this। फटाफट इसको complete करते हैं। So next the widget we are going to use is a divider। So this is a horizontal divider। इसको हम drag करेंगे and drop। So you see एक divider लाइन आ चुकी है यहाँ पे। इसमें आई डोंट थिंक और पे चेंज करने की नीड है, प्रॉपर्टीज आर ऑल गुड। Should we add a padding or something? Do you think, like on the sides? ओके,
And on the top of the avatar image, should we add a padding? Like, That would look good. yeah, because it's So, annoying me, it's bugging me. So, yeah, okay, so हम image को select कर लेते हैं. And then on padding from the top, it's about 10. yeah, 10 this is sounds good. good. Yeah, yeah. Okay. Also, image अभी काफी बड़ी है, so let's change the diameter of the image. Let's make it how much? 180. 180 looks good. Yeah, Okay. सबने इतना कर दिया. yeah, I think we're good to move forward. Okay. So let's see the application. So after this, we have a about me. So let's get this. This is similar to this text. So I would go here and type text, drag and drop, and same. हम text property में जाएंगे. इसका text change करेंगे to about me and और क्या change करना है इसका? Padding. So let's give it top say 20 and bottom say 20. Yes. And bottom say let's give it 10 or let's make it 20 and prop then the styling. तो हमें थोड़ा सा tight. Let's go for tighter Raj. Tighter Raj looks good. तो सबने ये वाला टेक्स्ट ऐड कर दिया अबाउट मी का. ओके. देन अब हमें ऐड करना है अपना अबाउट सेक्शन. सेम चीज वापस से हम टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे. And for this statement, go to my LinkedIn only and copy this text here and command C and command V. Same चीज text property edit करेंगे. Now we need padding. So left से 20 and right से 20. And अब हमें इसको अलाइन करना है सेंटर लाइन. So text align को center. ये यहाँ पे I मिस हो गया तो add an I. अभी अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो यू कैन जस्ट राइट रैंडम टेक्स्ट हियर. बाकी लेट मी नो जब आपके ये वाला स्टेप हो जाए. और सब कोई डाउट है कि मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एडिट करी है तो बता देना. ओके गिव मी अ थम्स अप अगर ये वाला हो गया. ओके नाइस प्रत्युष. अंकित, हाउ डिड यू अलाइन द इमेज टू मिडल एज इन ये इमेज मिडल में कैसे आई? Yep, आप एक बार right, right. ओके. तो बेसिकली जो कॉलम होता है ना, कॉलम अपने चाइल्ड के विड्थ के हिसाब से अरेंज करता है टेक्स्ट को. तो अगर मेरे कंटेंट से इतना है तो कॉलम का विड्थ से इतना होगा. बट जैसे मैंने ये ऐड करा था
ये टेक्स्ट की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो कॉलम ने उसके विड्थ के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर दिया एंड बाकी सारी आइटम सेंटर हो गई। नाउ कॉलम के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती है कॉलम्स एंड रोज के अंदर, मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो इस कॉलम के लिए जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है दैट इज द वर्टिकल अलाइनमेंट एंड जो क्रॉस एक्सिस है दैट इज द हॉरिजॉन्टल। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है दैट इज क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इज सेंटर्ड, तो उससे इमेज सेंटर हो गई। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर होता है, राइट? सी यहाँ पे मैंने कॉलम को सेलेक्ट करा एंड आई और द मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस। अब अगर मैं क्रॉस एक्सिस को कर देता हूँ स्टार्ट, तो ओके सारे आइटम स्टार्ट पे आ गए। ओके ओके। एंड बाय डिफ़ॉल्ट एंड वो सेंटर्ड था, राइट? हमने चेंज नहीं किया था। यस बाय डिफॉल्ट सेंटर था। ओके। एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट थी। स्टार्ट है। ओके। सो इफ आई डू दिस, आइटम सारे सेंटर हो गए, बट हमें स्टार्ट में चाहिए, तो वी वुड सेलेक्ट दिस वन। तो आई होप सबका यहाँ तक हो गया है, तो आई मूव फॉरवर्ड। अब हमें क्या ऐड करना है? नाउ वी हैव द रो ऑफ बटन्स, है ना, एक रो है हमारे पास एंड इस रो के अंदर तीन बटन्स है। तो हम यहाँ पे रो टाइप करेंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। रो बेसिकली एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करती है। तो अब हमें इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डालने हैं जो कि हो गए आइकन बटन। आइकन बटन आइकन बटन बेसिकली क्या करता है, आप उसके अंदर एक आइकन डाल सकते हो एंड ऑन टैब पे जैसा आप बटन को दबाओगे वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। तो आई वुड ड्रैग दिस एंड मैं रो के अंदर इसको ड्रॉप कर दूंगा। मेक श्योर आप कि आप रो के अंदर ही इसे ड्रॉप करो, कॉलम के अंदर नहीं। उसको चेक करने के लिए कि आपने सही करा है या नहीं, आप इस थर्ड ऑप्शन पे आ सकते हो दैट इज द विजेट ट्री एंड इफ आई एक्सपैंड द कॉलम, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रो है एंड रो के अंदर आइकन बटन है। तो लेट्स कम बैक टू द Can विजेट we पैलेट। can we not add widgets from the widget tree itself? As in, if we go to widget tree, can we add widgets from there? I think we can, right? We have this icon on the row. On the row, ओके yes. दिस आइकन, Yeah, we can add, right? यस। Okay, तो okay. इफ आई टैप ऑन दिस and search another icon because we need three icons, right? And click here. So we have now two icon buttons inside the row. Let's do this one more time. Icon button and tap. So now we have three icons and I go to the row and अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन करते हैं। तो what I did is मेन एक्सिस अलाइनमेंट एक रो की होती है हॉरिजॉन्टल, तो हमने उसे सेंटर क्लिक करा एंड जितने भी आइटम्स थे उस रो के अंदर सारे सेंटर में आ गई। ओके, सो आप सब इतना कर दो, देन आई मूव फॉरवर्ड। ओके, सो आर वी डन विद दिस? ओके, so let's add the icon to it. तो हम प्रॉपर्टीज पैनल में सर्च करेंगे वेयर इज द आइकन एंड हियर इट इज।
हमें एडिट करना है। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा एंड हमारे पास तीन ऑप्शंस है, मटेरियल आइकन्स, फॉन्ट ऑसम आइकन्स एंड कस्टम। तो अगर मैं मटेरियल में सर्च करूँ गिटहब, तो मेरे पास कोई आइकन नहीं है, बट लेट्स सर्च इट ऑन फॉन्ट ऑसम। यहाँ पे मेरे पास गिटहब का आइकन है, तो आई वुड क्लिक ऑन दिस एंड गिटहब ऐड हो गया। तो हम दोनों के लिए सेम चीज़ करेंगे, क्लिक ऑन आइकन, आइकन प्रॉपर्टी, फॉन्ट ऑसम एंड ring it. Now for the third button, icon, font awesome, and Twitter. Okay. अब इसमें थोड़ी पैडिंग की कमी है, राइट? सारे बटन्स एक साथ हैं, तो लेट मी क्लिक ऑन दिस and add a right pattern. Let's make it 20, and this button, let's make it 10 and 10 on both sides, and this button on the left 20. How about space even in a row? Should you apply space even here? सबका सेम डाउट है, राइट? सो मैं यही बताने वाला था, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, एक बेटर वे इज टू यूज अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द रो। तो हम रो पे जाएंगे एंड यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, राइट? सो आई हैव this button to place it on the end, then we have space evenly, we have space around, and this. So स्पेस इवन से बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है यहाँ पे। Okay, so one of the doubt is कि where item spacing and row work the same way as padding in a responsive screen. So by item spacing, I suppose you mean these properties, alignment properties, right? So when we have a No, no. Yes, go ahead. okay, so spacing is very responsive. If your screen size is small or bigger, the spacing would vary, but padding remains the same. Yes, so if you add a padding across any widget, it will not be responsive. As in, for example, if you have added a padding of 10 pixels on every screen, it will be 10 pixels only. Okay, it will not be responsive. But if you are adding an item spacing, then it will act as giving you space evenly, or basically, for example, if I run this on web, right? So item spacing will take care of, if you have applied a property of space evenly, then it will take the width, and from that width it will space even every widget. So padding and item spacing works differently. Padding is same as Yash said, and item spacing will be responsive. Okay, let's add some padding here as well. So if I click on text and at the bottom, let's add a 20 padding. So now it looks good. Uh, is everybody on the same page? इतना हो चुका है। Okay. So now let's add the navigation to external links. This is the interesting portion. So मैं GitHub वाले बटन को select करूँगा
And here you have the action button, right? So let's click on the action button and add an action. So हमारे पास action defined है that is on tap. So on button tap क्या होना चाहिए? We should navigate to external link. So let's search for it. URL. And we have the launch URL action. तो इसको मैं click करूँगा. And we have the type. तो एक specific URL पे variable. हम एक specific URL पे जाने वाले हैं. And here we would type the URL. So let me just copy my GitHub URL and paste it here. Done. It was this simple. Now let's do the same for other icons. Click on LinkedIn, action, add action. On tab, we would do launch URL and copy my LinkedIn URL and add it here. Same for Twitter, add action, on tab, URL, and I need my Twitter URL. Okay. So I've copied my Twitter URL. अगर ये वाला स्टेप रिपीट करना है तो लेट मी नो. और सबका ये वाला स्टेप हो गया. Okay. I'll wait for like 30 seconds more because I believe सब अपने सोशल्स का लिंक ढूंढ रहे होंगे सब. In the meantime, do you have any questions? Himanshu asked about single child scroll. You have already answered that. In the column or row or widget, you have a property called enable scrolling or disable scrolling. So basically, there is a property called scrolling. It has a boolean value, enable or disable. So if you enable it, then your column becomes scrollable, and if it's disabled, then your column will not be scrollable. So this is how it works in FlutterFlow. And FlutterFlow generates the Flutter code as well for you, which you will see in the upcoming sessions. So this is where you can see your Flutter code. But I think that's a premium feature. You can't export the code. So exporting the code is a premium feature. You can see your code, but you can't export it. Like one fine day, you feel like, oh, I don't want to work with FlutterFlow, but I have a Flutter code from the app that I created in FlutterFlow, and let's just export it and use it in VS Code or Android Studio, your favorite IDE. You can't do that. Instead, even if you don't have a FlutterFlow premium feature, as in FlutterFlow premium access, I mean. If you have a premium access, then you can export the code and use it. But you all are on a free plan, so you can't do that right now. Harshit is asking how can we see it in web? Yes, we will show you how it will look in web in a while once we complete the application. Yes, you can make a Flutter app responsive. You have media query, you have layout widgets. Okay, so should we move forward?
Yes, I think we can move forward. Yes. Okay, so now the last step that is the download resume button. So let's search for a button. I go to the widget palette, button, and drag and drop. So same thing, we have to change the properties. I go to padding. Let's add a padding here. Then the text of the button. हम इसको कर देते हैं download my resume and title is good, border radius is good. Yep. अब हमें सेम चीज करनी है एक्शन डिफाइन करने के लिए. I go to actions, down, add action, URL, launch URL, and let's go to my LinkedIn resume, and I would just copy this URL and add it here. So that's how you have added the download resume button. So our application seems complete. और कोई डाउट है किसी को इस पे? Because next we would so next we would go to the testing button. So if I click on this, हमारी ऐप टेस्ट मोड पे लॉन्च हो जाएगी and we can see the live preview of the application. इसमें अराउंड लाइक 1 मिनट लगता है, तो तब तक if you guys have any doubts, सबने वो यहाँ तक तो रिज्यूम फॉलो कैसे करा अपलोड ना? किया वो एक बार बता दोगे? हाँ, तो जैसे हमने बाकी सारे बटन्स बनाए थे, वैसे हमने यहाँ बटन से ड्रैग एंड ड्रॉप करा और एक एक्शन ऐड करा. एक्शन में ऑन टैप एक्शन, यूआरएल लॉन्च, एंड यहाँ पे हम यूआरएल डिफाइन कर देंगे. तो आपका रिज्यूमे ओके का मैं समझ यूआरएल. हाँ. ओके. अच्छा, किसने अपनी ऐप टेस्ट मोड पे लॉन्च करी थी? ओके, एंड आपका ऐप स्टार्ट हो गया? ये ओके, राइट. तो हमारे पास ऐप रेडी है, एंड इफ आई क्लिक ऑन गिटहब, it takes me to my GitHub and same for LinkedIn and Twitter and download resume. तो जिसका ये वाला एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है एंड ऑल द बटन्स आर वर्किंग, you can raise your hand or a thumbs up. Yash, can you tell how to launch in test mode again? Okay. And Pratyush, you have a question you can ask after Yash completes. So at the top you have this button, फ्लैश जैसा बटन है, तो if you click on this, आपकी ऐप टेस्ट मोड पे लॉन्च हो जाएगी. Do you all know what is the name of the mascot of FlutterFlow?
It's called Flash, as in lightning. So that is why the icon is like that. No, Hamza, the bird is Flutter's bird, so that's called Dash. Dash is Flutter's mascot, and Flutterflow mascot is called Flash. You can just Google Flutterflow mascot and you'll be able to see how it looks. ओके, सो हमारी ऐप बिल्ड हो चुकी है एंड नाउ अब हम इसको करेंगे पब्लिश एज अ वेब एप्लीकेशन। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज गो टू सेटिंग्स एंड इन प्लेटफॉर्म्स हमें वेब को इनेबल करना होगा। तो आई क्लिक ऑन वेब एंड वेब इनेबल हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो फटाफट सब इतना कर दो, go to settings, platforms, and then web. Okay, so next is web development. तो ऐप सेटिंग्स के अंदर एक बटन है वेब डेवलपमेंट का, तो टैप ऑन इट एंड यहाँ पे वी कैन पब्लिश। तो लेट्स चेंज द डोमेन ऑफ इट। लेट मी मेक इट यश खट्टर portfolio and publish। Okay, let me copy paste and it says page no found block। Let me click on publish again। Let's try with the original project, web development। अच्छा, जब तक ये पब्लिश हो रहा है तब तक कोई डाउट किसी को? कौन कौन अभी पब्लिश कर रहा है मेरे साथ? बिकॉज बाद में यू गाइस हैव टू सबमिट दिस एप्लीकेशन आल्सो। नाइस नाइस नाइस। पब्लिशिंग, फिर पब्लिशिंग। अच्छा, कोई बता सकता है अगर फ्लटर में हमें पब्लिश करना हो तो क्या स्टेप्स हो गए? सेम चीज अगर हमें एज अ वेब एप्लीकेशन फ्लटर में पब्लिश करनी है। पब्लिश स्टेप्स अगेन। तो बेसिकली पब्लिश करने के लिए दो स्टेप्स है। फर्स्ट इज सेटिंग्स, देन यू गो टू द प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म में आपको वेब इनेबल करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप वेब डिप्लॉयमेंट पे जाओगे एंड यू क्लिक ऑन द पब्लिश बटन। सो अभी मेरी ऐप लाइव है ऑन यश खट्टर पोर्टफोलियो डॉट फ्लटरफ्लो डॉट ऐप। अच्छा, कोई बता सकते डॉट ऐप किसका डोमेन होता है? डॉट ऐप किसको नहीं पता डॉट ऐप कब आता है, कौन सी वेबसाइट पे पब्लिश करने पे डॉट ऐप आता है? वेब ऐप जब भी हम फायरबेस होस्टिंग से पब्लिश करते हैं या तो डॉट ऐप करके डोमेन आता है। Yep, so my now the website is live।
किस किस की वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है? Please share your links in the chat. We would love to see it. Publish नहीं हो रहा है, NA लिखा रहा है. हाँ तो रिफ्रेश कर एक बार पेज को। मेरे में भी एनए दिखा रहा था, देन रिफ्रेश तो आ गया। Yes, let's open these links, huh? Let's see हाँ how it looks. ओके सो वी हैव अनुपम ओ Oh, इन्होंने yeah, he did an extra mile. Yeah, that's cool. This looks actually nice. That gradient. ओके सो दिस वन हैज डोटेड डिवाइडर। That's कूल। nice. We will share a Discord link, okay, if you haven't joined it, and you can. There is a, I think, show off channel or something. You can post these links there, okay. I'll share the Discord link. And also, like Anupam added the gradient, so Anupam can tell us the steps how he did that and stuff like that in the show off channel itself. I'll post the link of the Discord. Please share all of these links there. We would love to see them. ओके सो कूल। किसी ने हमने सेटअप की फोटो डाली है। Cool keyboard. ओके इन्होंने भी ग्रेडियंट डाले टेक्स्ट में, एंड ऑल्सो बटन के कलर्स भी चेंज करे हैं। Oh, nice. Nice, Preeti. Looks good. Yes, I'll share the हाँ Discord link here again, and Yash will also show you the QR code, so don't worry. But thank you so much. You like all followed along and you built some great portfolios, and I think after this session, if you want to enhance it, you can. And thank you so much for going an extra mile, doing something different as we were answering your questions. Yes, we can add animations to items. You can try that after the session. It's very easy. You can explore the property panel and you'll find something there to add animations. So, and probably I think you have an animation widget, or just explore how you can add animations. And please don't leave, because we have something in the end for you that you will like. So please stay if you can. ऑल्सो आवर नेक्स्ट सेशन इज ऑन डिजाइन सिस्टम्स एंड एनिमेशंस, तो उसमें भी वी कैन एक्सप्लोर एनिमेशंस टुगेदर। शुड आई स्टार्ट द एक्टिविटी देन? Yeah, we are complete, right? या Did you complete your presentation? As in, do you have something there? ओके सो आई हैड दिस थिंग, सो द रिव्यू थिंग वी हैव ऑलरेडी डन। What I wanted is कि you should add all these links to the Google form. So can you scan this form and just add your portfolio links here? I stay here on like 30 seconds now. And about resources, so these are the two resources. First is the official documentation of FlutterFlow, and second is the YouTube channel. So these are the two resources that you need in order to explore FlutterFlow or know about more about it. So these are the things that you can follow along with our builder series.
Okay, shall we start the quiz then? Can you go to the QR, as in the QR where, yeah, this one. You all can just click a photo if you want Hmm. right now. We have a quiz that we want to do with you. Yeah, Yash, we can go back to the quiz now. Okay. I will also play because I haven't seen the questions and all, so it would be fun. Yeah. Give a thumbs up if you have joined the quiz, and if you are facing any issues, just let us know, please. Yeah, it's showing no active polls because I think Yash has not started the quiz yet. That is why. But yeah, the screen is fine. I think you have to be on that screen. Are you all good? As in, should we start? Okay, so we have three people in the quiz. Four. Yes. Yes, do you want to put your laptop on charge or something? We don't want Yeah. this to like end in the middle of your session. Just a second. Did you guys have fun, as in building your first app with FlutterFlow? You can just unmute your mic, share your experience. We just want to know how was it, so that we can take your feedback and for the upcoming sessions. Yes, ma'am. Harshit likes it. Okay. I guess Pratyush only likes Harshit had fun. it. Pratyush also had fun. Like we have 23 in the call and just 11 people in the. No, not 11, 14, sorry. 14. 14 people. 11 questions, okay. Do you guys don't want to join or what? As in, are you facing some issues? Like, we'll wait for 30 seconds more and we'll start. We have a leaderboard as well, right? And it's like fastest fingers first or something, right, Yash? Yeah. Okay. Attentive and fastest fingers first at the same time. Okay. We have to be fast. I will try to be fast, anyways. You have 17 people. Saturdays works for you all right, as in you don't have any issues with Saturdays. We can't have it in a weekday, so we decided on a Saturday because Sunday is for Sundaying group, no? So we don't want to ruin your Sunday. Modi ji.
Modi ji actually joined. That's nice. Rail 1 is in Flutter, so now let's see which app is in FlutterFlow next from the government side because Modi ji just tuned in. So let's see. Okay, so should we start? Yes, yes, I think we should start. Okay, so here's your first question. Oh, 100%. Now, next question. Man, this is hard. I see the time and I'm just blank. What to answer? Oh, 6% ने ग्रिड व्यू भी करा है. Oh, nice. Grid view and row. Okay. Did you actually put selfie button on this? Wonder how many people will actually select that. ओके, तो ये वाला ट्रिकी था थोड़ा. Oh, okay. But what was the actual answer? Circle avatar. We can use an image also, no? We can use, yeah. So you played us. Yes. People be like, okay, there should be a widget we haven't heard of, so it must be unicorn. Wrapping the column in a blanket. Are you serious? I would probably submit a form to NASA anyways, so. Actually, 6% ने लॉन्च रॉकेट करा है. They actually want to launch a rocket. This is something जो हमने डिस्कस नहीं करा आज. People wants to play you now, Yash. See, the answers they are selecting where your feelings live, a secure place to store snacks. ये तो सही होना चाहिए. All developers be like, yes, let's import a coffee first.
I think we have some cat lovers. Ask your cat. Okay, you First one can't is blame me. my personal No, favorite. you can't blame me, okay? Blame your co-host. This is something I'll carry forward in the next sessions, okay? Yeah. I'm here watching you. Okay, so now is the 11th question. This is the most serious question, okay? And the people who are outside from Delhi, please don't get offended, okay? We didn't know that we have people from London and Mumbai and from other parts of the country, so how many people like Momo and how many are Chole Bhature fans? Can you just write in the chat? We want to know. Not that we are Oh, planning to like ship you or something, but we just want to know so that in the next meetup we know what you actually like so that we can have it in your lunch. Rishabh loves both. You have to come to India, no, Rishabh, for that. Yay, Harshit actually won by some seconds. That's nice. okay, the hardest question. Yeah. So you actually the correct answer was chole bhature, right? But people opted for dolma anti momos. Okay, I told you to put that answer, dolma anti momos, and no, you were like, no, I like chole bhature, so I'm going to put that. Okay, that's nice. Thank you so much, everyone. We hope you liked the session. I'll share you a link for the for RSVPing to the second session. We want to have fun and learn at the same time. Okay, so please do join us for the second session as well on next Saturday. And if you have any doubts, win a prize. Yeah, at the end of the cohort, we will give you a prize. So stay tuned for all the sessions. Yes, Yash will share his LinkedIn and all other social handles in a while. Before that, this is our Discord channel, and if anybody hasn't joined it, please join it. We do all our official communications and unofficial communications through Discord. So you can take a photograph of it or scan it right now. And yeah. So thank you everyone for joining this session. These are all my socials. You can connect me there. And if you have any doubt, you can ask on Discord or any other platform you prefer. Thank you. Yes, and please share your published web apps with us on Discord. Yes. Thank you, everyone. See you next Saturday. Bye. Take care.